Brihadaranyaka Upanishad. This Upanishad is connected with Shukla Yajurveda. Brihat is big. Brihat means big. Aranyaka is the part of Veda which is supposedly to be studied and chanted in forests which do not have any congestion or traffic, or in other sense it should be devoid of human interference. Such concentration is required to chant these mantras. Upanishad is the philosophical part of Veda. Brihadaranyaka Upanishad has a great tradition. Some of the great Veda Vakyas, the Mahavakyas, emanate from this Upanishad. A beautiful story between Yajnavalkya, Gargi, Maitreyi is worth its mention. Atmavare drashtavyah shrotavyah mantavyah nididhyasitavyah. This is a conversation between a husband and his wife. The husband just declares that he is going to forest. Wife asks, "Why are you going?" Then he replies, "I have something more to do." Then this lady understands that the husband is a very meticulous, street smart person. He will never leave something for the sake of an inferior possession. If he is leaving everything behind, his family, his wealth, everything behind, and going to a God-forsaken place, that means he is aiming at something which is very, very high. What could that be? That is the crux of the discussion. In this discussion, the husband, the sage, the Maharshi reveals that you have to explore your inner self. This is the one of great legends of Brihadaranyaka Upanishad, and there are many other more references. Hence, Brihadaranyaka Upanishad is regarded as one of the greatest treasure houses of the Vedic literature, and we have a privilege to listen to a great scholar, Shastra Nidhi, Shri R. Krishnamurti Shastrigal, who is amidst us. He is no stranger to Dattapitham. Devotees know him very well. And you name the award, he has it. He has travelled all over India, and in spite of his advanced age, he is more active than many others. And he is well versed and versatile in more languages. Needless to say, in Sanskrita, in Tamil, in Hindi, English, he can speak in many languages. For the benefit of devotees, I have requested him to speak in Hindi as the main subject, but prior to that he will give you a few lines of introduction in Sanskrita, and I request Shri Krishnamurti Harapatigal to commence his speech, and I also request Shri Mahabaleshwar Bhattji to come on to the podium. Shri Mahabaleshwar Bhatt is also a recipient of Shastra Nidhi Award of Dattapitham. He is a great grammarian and a great activist in the dharmic field. We heartily welcome all the scholars, and Shri Jitu Dave, as you are all aware, is the organizing secretary of Datta Yoga Center, UK, and himself a great philosopher and practitioner of Vedic Dharma. We are privileged to have him amidst us, and I request the main speaker for the session, Shri Krishnamurti Harapatigal, to commence his speech. Brihadaranyaka Upanishad. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदत्त श्री गुरुदत्त। अस्मिन् दत्त विद्यापीठे दत्तात्रेय स्वामिनां तदनन्तरं तत्परम्परागतानां स्वामिपादानां च महिम्ना इदं क्षेत्रं सुक्षेत्रं सर्वथा उत्तमेषु परिगण्यमानं विराजते। अत्र च वेदशास्त्रपाठशालाः वर्तन्ते प्रवर्तन्ते। पंचशेभ्यः संवत्सरेभ्यः प्रतिवत्सरम् अत्र विद्वत्सभा काचन आयोज्यते। चतुर्णां शास्त्राणां पंडिताः आगत्य तत्र स्वस्य विषयेषु चर्चां कुर्वन्ति। विशेषतः बहुभ्यो वत्सरेभ्यः एव वेदशास्त्र अभिज्ञेषु श्रेष्ठान् विचित्य तत्र तत्र तेभ्यः वेदनिधिः शास्त्रनिधिः इति बृहत् सम्मानकार्यक्रमोपि श्री स्वामिपादैः निर्वर्त्यते, यत्र अहमपि भागी। अस्मिन् विजयनामक संवत्सरे एव विजयं ददाति। अस्माकं तत्र विजयविशेषः अपि लब्धः काञ्च्यां 27 दिने पूर्वमासे। इदानीम् अस्मिन् पर्याये बृहदारण्यक उपनिषदमधिकृत्य मया वक्तव्यमिति एतैः आज्ञापितोऽहं। तदनुसृत्य किञ्चित् आङ्ग्लभाषया आरम्भः, अनन्तरं संस्कृते मध्ये, अनन्तरं हिन्द्या। आङ्ग्लभाषा तु यद्यपि मम ज्ञानमस्ति अथापि परिचयो नास्ति, तस्मात् किञ्चिदिव मध्ये मध्ये तदपि संयोज्य वदामि। इस बड़ी महासभा की शुरू कई सालों के पहले हुआ। हर एक साल यहाँ तो चतुशास्त्रों की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ आकर भाग ले रहे हैं। स्वामिपादाः अपि इदानीं समागताः इति अस्माकं महान् उत्साहः। एवं विद्वत्तल्लजानां सम्माननकार्यक्रमोपि बहुभ्यो वत्सरेभ्यः प्रचलति। यत्र कई सालों से यहाँ विद्वानों का सम्मान हो रहा है, वेद निधि और शास्त्र निधि। 5-6 पहले ही एक शास्त्र सभा की शुरू हुई। इस साल में भी कई विद्वान पधारे हैं। उनका जो वाक्यार्थ विचार है वो तो 9 बजे से वहाँ होगा, कल भी था। अब मेरा यह उपन्यास का विषय है बृहदारण्यक का उपनिषद। उपनिषद माने आत्मतत्व का ज्ञान। ज्ञान ही उपनिषद कहलाता है। ज्ञान को उपनिषद नाम कैसा आ गया? आत्मज्ञान हो तो हमारा सारा दुख मिट जाएगा। कोई भी दुख या शोक हमें अज्ञान से हो रहा है, हम आत्मा को भूलकर बैठ रहे हैं। आत्मा को भूलकर शरीर को आत्मा बना करके मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा बहुत दुख हो रहा है, मुझे दर्द है। ऐसे जो जो विचार हैं वे तो आत्मा के अज्ञान से। जैसे कोई रस्सी को देखकर यह सांप है ऐसा मान करके उसको डर होता है। जब प्रकाश में उस रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो अब तो सर्प का नाम भी नहीं रखता। सर्प कहाँ गया? सर्प तो बहुत तेज से दौड़ गया। कहाँ दौड़ गया मालूम नहीं। इसी तरह हमारा जो जो दुख हैं, जो जो शोक हैं, तरति शोकम आत्मवित्, छांदोग्य का एक सूत्रभूत वाक्य है। जो आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लेता है, जैसे हमारे स्वामी जी आदि आत्मज्ञान वाले हैं, गुरुजी हैं, उनको तो सभी शोक और दुख चूर चूर हो जाता है। इसका तो निरूपण
आत्मा का स्वरूप का निरूपण उपनिषदों में है। जैसे हमारे नेताजी वंशी कृष्ण जी ने कहा कि बृहदारण्यक, वो ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत बहुत बड़ा है। आरण्य में कहने वाले और विचार करने वाले विषय की चर्चा हो रही है, इसलिए आरण्यक कहलाता है। अब तो एक प्रश्न उठेगा कि हम तो शहर में रहते हैं, कैसे बृहदारण्य का अध्ययन करें? शहर भी तो आरण्य के समान ही हो रहा है। हम सब जंगल में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा पशु विचार बहुत है, इसलिए हम ही बाघ और सिंह बना सकते हैं। इसीलिए हमारे संकल्प में दंडकारण्य शकाब्दय सुनवर्तमान व्यवहार के, वो तो अरण्य का समान है, यह भी हम कह सकते हैं। उपनिषद का वो सभी वेदों की शाखाओं में एक एक उपनिषद अंत में होता है, वो जो जिसलिए आखिर में अंत में आता है, इसलिए भी वेदांत है। लेकिन यह तो मुख्य कारण नहीं है। वेद का अंत माने रहस्य से जानने वाले मुख्यतम अर्थ है। अंत शब्द मुख्यम अर्थम ज्ञातव्य विशेषम बोधयति। अंत शब्द वेदानाम अंतः मुख्यतया ज्ञातव्यः येन ज्ञातेन अपुनर्भवो भवति तादृश रहस्य विषयः यत्र उच्यते सैव वेदान्तः इति। वेद के अंत भाग में है मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, संहिता भाग, आरण्यक भाग और उपासना, अंत में आत्मज्ञान, वो भी कह सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के तो मंत्रोपनिषद एक है ईशावास्य उपनिषद, ये ब्राह्मणोपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। मंत्र में बहुत संक्षेप से 18 मंत्रों में जो कहा गया है, विद्या और अविद्या, विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयग सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। उस यह मंत्र ऐसा बताता है। इसी मंत्र का व्याख्यान रूप में सभी उपनिषद आए हैं। बृहदारण्य के आरंभ में हमारे शंकराचार्य जी ऐसे कहते हैं, बयान करते हैं कि सर्वाः उपनिषदः विद्या विद्या विभाग प्रदर्शनेनैव उपक्षीणाः। विद्याक्षेत्रमन्यत् अविद्याक्षेत्रमन्यत् अनयोः द्वयोः विभागज्ञानेन अविद्यापरित्यागेन विद्याक्षेत्रं प्राप्ताः अपुनर्भूताः भवन्ति। मया जो उद्धृत हुआ है वो ऐसा ही नहीं, शब्द का उद्धरण भी है, अर्थ का भी। अर्थतः अनुवदामि कुत्रचित्। विद्या माने क्या है? जिससे हमारा परिपूर्ण ज्ञान ही विद्या है। लेकिन गणित विद्या भी है, और वो हिस्ट्री है, ज्योतिष है, सभी शास्त्रों के विषय हैं। आजकल तो विद्या की संख्या बढ़ती जाती है। कंप्यूटर में तो कई विभाग हो रहा है, वैद्य शास्त्र में कई विभाग हैं, विद्याः अनंताः भवन्ति। लेकिन जो आत्मा का बोध कराने वाला विद्या है वही विद्या है। विद्या का लक्षण ऐसा कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें बंध से छुड़ाता है वही विद्या है। बंध में बंधन करने वाली विद्या तो अविद्या ही है। उसको हम कह सकते हैं कि अपूर्व विद्या। अकारः पूर्वः यस्याः विद्या शब्द, यस्य विद्या शब्दस्य अपूर्व विद्या इति मदीय व्याख्या। अतएव मांडूक्य मुंडकोपनिषद में अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि हमारे सब जनों का यह पहला कर्तव्य है कि 2 तरह की विद्याएं सीखनी चाहिए, पराविद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या माने हम जो अब सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे व्यवहार में जिसका उपयोग हो रहा है वो सब अपरा विद्या में आती हैं। अपरा माने क्या बात है कि दृश्य पदार्थों में, इस संसार में, सारी दुनियाओं में चतुर्दश भवन हो, जहाँ तहाँ जाते हैं, वहाँ जो हमारे इंद्रियों का विषय बनता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उनके विचार में जो हो सकते हैं कार्य, ये सबको बताने वाले अनात्म विद्या जो है
वे अपरा विद्या हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कर्मकांड, उपासना कांड, सब उपनिषद के शब्द भी इसके अंदर आते हैं। अपरा विद्या, उपनिषद का जो तत्व कहा गया है, उसका जो अनुभव हो रहा है, वो परा विद्या। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सभी 4 वेद हैं, अनेक शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं लुप्त हो गई हैं। जो शाखाएं मिलती हैं उनका रक्षण तो यहाँ हो रहा है। राणानी शाखा, जो अपूर्व शाखाएं हैं, उसका रक्षण का कार्य भी यहाँ तत्वपीठ से हो रहा है, उसका मुद्रण भी हो रहा है। सभी शाखाओं की विद्या जो वेद है, वे सब तो जब आत्मतत्व का बोध करने वाले जो 2-1 वाक्य, महावाक्य कहते हैं, वे ही परा विद्या। आत्मतत्व ज्ञानम यया बोध्यते यत्तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, ऐसे जो आत्मतत्व का बोध कराने वाले 4 या 5 वाक्य हैं, वे ही परा विद्या है। मतलब क्या है? अपरा माने जिसका फल का अंत होता है, वो अपरा विद्या है। जिसके ज्ञान से हमें उसके बाद कोई भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सब पूर्णानंद मिलता है, पूर्ण बन जाता है, वो परा। फलतः परात्वम अपरात्वं च न स्वरूपतः, जिसके फल अंत कराता है सभी कामनाओं को, वो परा विद्या। परा विद्या का विवरण तो अब बृहदारण्यक में बहुत हैं। बृहदारण्यक तो 6 अध्याय वाले हैं। 6 अध्यायाः प्रवर्तन्ते, बृहदारण्यकं 6 अध्यायीत्युच्यते। परंतु यथा पाणिनिना कृतं व्याकरणं सर्वोत्तमम् 8 इत्युच्यते, तद्वत् बृहदारण्यकमपि 8 इति वक्तुं शक्यते। कुतः? शतपथब्राह्मणे येषां 6 अध्यायानां पूर्वम् अध्यायद्वयमपि बृहदारण्यक उपनिषत्वेन परिगण्यते इति भाष्यवाक्यैः ज्ञायते। भाष्ये 2 वक्ष्यमाणं विषयं 4 वक्ष्यते इति वदन्ति प्रथमाध्याये। एवमेव 3 विषयं 5 उक्तमिति 6 वदन्ति। इतः पूर्वम् अध्यायद्वयमपि उपनिषत्वेन परिगणितं, परन्तु तत्र आत्मविषयकः विचारः प्रायः नास्ति इति कृत्वा एतैः भाष्यकारैः तस्य व्याख्यानं कृता। गणनावेलायां तु 6 अध्यायाः भाष्ये विवृताः, परन्तु गणनावेलायां प्रथमाध्यायस्य 3 इति नाम एवमेव 8 इति वक्तुं शक्यते इति मम मनीषा। तत्र प्रमाणं तु वर्तते। एवञ्च 8 व्याकरणस्य वेदान्तस्यापि 8। एवमेव छान्दोग्ये 8 अध्यायाः सन्त्येव। वस्तुतः 6, 7, 8 एव वेदान्तपराः, 5 अध्यायाः उपासनापराः। एवञ्च वेदान्ते व्याकरणे च अतः वैयाकरणः अपि अत्र समाहूतः। 8 तु वेदान्तस्यापि एवं व्याकरणस्यापि। व्याकरण का जो श्रेष्ठ है वो भी बताया गया है छान्दोग्य में। वेदानाम वेदम। नारद जी सनत कुमार जी के पास गए, मैंने सभी विद्याओं को सीख लिया, कोई फल तो नहीं हुआ, अंतिम फल नहीं मिला। मन की जो शांति ही, जो पूर्णता है, जिससे हम सभी समय आनंद उठा सकते हैं, वो मुझे नहीं मिला। उसको जो जो विद्याएं प्राप्त हैं, उससे उसकी संख्या तो बहुत बड़ी लंबी है। नक्षत्र विद्याम, क्षत्र विद्याम, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और साइंसेस जहाँ खोदते हैं तो तेल मिलेगा। जहाँ क्षेत्र में वो ज़ूलॉजी, जो जो साइंस के विभाग हैं, ये सब संगीत विद्या सब मालूम है नारद जी को, लेकिन मन में अशांति फैली रखती है। सोहम भगवत शोचामी त्वं मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु। परंतु वेदाः अधीताः, उपनिषदः अपि अधीताः, उपनिषदि एव तत्त्वं वर्तते, कुतः तस्य शोको न निवृत्तः इत्युक्तो ग्रन्थपाठेन शोकनिवृत्तिर्न भवति। आत्मवित् शोकं तरति। विद् धातोः यद्यपि ज्ञानसामान्यमर्थः अथापि अनुभवारूढं साक्षात्कारात्मकं ज्ञानमेव शब्द अजन्यं
शब्दैः लक्ष्यमाणं स्वरूपभूतं आगमैक समधिगम्यं यत् अपरोक्षं ज्ञानं सा एव अवगतिः विद शब्देन उच्यते। अतएव अहम अनात्मविद् अस्मि, सोहम मंत्रविदेव अस्मिनात्मविद्। तरति शोकम आत्मविदिति श्रुतं ह्येव मे भगवद्विषयेभ्यः। अस्मादिशाः किं मन्यन्ते, मया तु सर्वाः विद्याः अधीताः, आत्मविद्या प्रतिपादक ग्रन्थोऽपि कण्ठस्थीकृतः, दशोपनिषदः। मम ज्ञानं जातम् अथापि शोको न निवृत्तः, ज्ञानं निष्फलम् इति निर्णयः अस्माभिः क्रियेत अस्मादिशैः मंद बुद्धिभिः। नारदेन किं कृतं, मया सर्वाः विद्याः अधीताः, शोकस्तु न निवृत्तः, तस्मात् आत्मज्ञानं सम्यक् न जातम्। आत्मज्ञानवतः शोको नास्ति इति वाक्यं सत्यसत्यं, सत्यसत्यं नाम अतीव सत्यं। मम तु शोको न निवृत्तः, तदा किं वक्तव्यं, ज्ञानं निष्फलमिति न, मम ज्ञानं नागतम्। एवमेव निर्णयः कर्तव्यः सद्भिः शिष्यैः। असन्तशिष्याः किमपि वदन्ति, तत् वार्तिके सत्सु तरत्सु असन्तस्तिष्ठन्ति, असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति इति सत्यसत्यमी विषये बहु उक्तमस्ति। इदम् एकम् अत्यन्तम् आवश्यकं ज्ञानम् उपनिषद्भिः ज्ञायमानं। यत् फलम् उक्तं तत् फलं न जातं चेत् तादृश साधनम् अपरिपूर्णं। साधनपूर्तिश्चेत् साध्येन भवितव्यं। तस्मात् अहम् आत्मविद् नास्मि। भवादिशाः आत्मविदः श्रूयन्ते, भवन्तः दृष्ट्वा एव शोकाः डयन्ते आकाशे। तस्मात् येन ज्ञानेन अनुभूयमानेन भवतां शोकनिवृत्तिर्जाता तज्ज्ञानम् अनुगृह्णातु भवान्। अनुगृह्णातु इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्तौ, उपदिशतु इत्युक्तौ उपदेश अगम्योऽयं विषयः वस्तुतः। भवतु नाम एतादृशतत्त्वनिरूपणं बृहदारण्यके बहुधा विस्तरशः कृतमस्ति। तत्र यथा मैत्रेयी ब्राह्मणमेव अधिकृत्य मया किञ्चिदुच्यते। I shall deal the special chapter which is described as the dialogue between husband and wife. Nowadays, husband and wife will dialogue about cinema or about our politics, about our day-to-day cricket. But the ideal husband and wife, spouse, were there, Yajnavalkya and his first wife Maitri. Yajnavalkya had two wives. If one has two wives, he has to take sannyasa. This is also here. He has taken sannyasa parivrajya at the end, और सभी छोड़ करके वो सन्यासी बन गया। लेकिन सन्यासी बनने से ही काम नहीं चलता है। वो जो उसने वो he says one day, oh Maitreyi, Maitreyi is the name of first wife. Maitreyi, aham pravrajishyan asmi. I am planning to take sannyasa near future. Yes. What do you want from me? From you, I take permission. Without permission, in the grihasthashrama, the husband cannot do anything, dana or anusthana or anything. Uvayoho tadisha aikamattamasti ekasya anumatya. Especially taking sannyasa only after getting permission from wife and children also, if he is grihastha. Then he says, Sahovacha Maitri ena ham Pravrajishyanvareham asmat sthanadasmi. Now I want to do one thing. I have earned so many wealth, so many houses, so many cows, so many gold, etc., etc. Because he had so many students to teach in 4 Vedas. Atayeva Yajnavalkyaha Chaturveda iti jnayate. Bo samashravaha gaha udajatat iti vachane. In the commentary of this sentence, Bhagavad Padacharya says that
अर्थात अनेन याज्ञवल्क्यः चतुर्वेदीति ज्ञायते. चतुर्षु अपि वेदेषु छात्राः आसन्. चतुर्वेदाध्यापने चतुरः आसीत्. यश्चतुरो वेदान् अधीते स एव चतुरः. चतुरश्चतुरो वेदान् अधीते इति वर्तते. एवं छान्दोग्येपि चतुरो वेदान् 12 वत्सरेषु अधीत्य आगतवान् इति वर्तते. In those days, all students were learning 4 Vedas because their memory and brain was such high. Nowadays, one Veda is very, very difficult to understand and remember. He says, therefore, which I have earned so many wealth, I have to divide between you two. Maitreyi, first wife, second wife is Katyayini. After going him, some ladai will come. Some quarrel will come with... this is nowadays also. Nowadays, which is happening, that is also described in the Vedas also. Trikal satyaha vishayaha bodhyante. Anaya Katyayiniya antam karavani. मैं सबको विभाग करके I will divide my wealth into 2 parts equally. Then she told, this is the highest ideal word. What I shall do what with this wealth? Anena vittena kimaham kuryam. Can I become immortal by this wealth? Having so many wealth, can one become immortal? Amrutatvam ashyam kim? Then immediately he told her, Amrtatvasya tu na ashasti vittena vittasadhyena karmana. One cannot get immortality. Immortality is the nature of own self. Everybody is immortal always. Amrtasya putraha. Vedas proclaim and addressing all the people, you are the progeny of the immortal. Progeny is equal to the original reason. Amrtasya putraha, aye vidvaha amrtasya putraha. Amrtatvam sarvesham atmanam svabhavaha. Najayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavita va nabhuyaha. Ajo nitya shashvato ayam puranaha na hanyate hanyamane sharire. The bodies are coming and going. There are so many births and rebirths are experienced by us also, because there is no beginning for this whole world or universe. Therefore, but the Atma, the self or the pure consciousness is not taking birth or rebirth or getting death or getting decay or getting growing and decaying. These are all related to our bodies, our sharira. We have the illusion and delusion. Illusion come delusion. Adhyasa, that taking things in one place, we are understanding that things are happening in another place. Like one see a crystal clear, what is that called, paperweight. Spadika. Spadika is crystal, yeah, jewel, which is always very, very clear. Crystal clear. बोलते हैं ना वो, हाँ, coarse. Then one sees that coarse as red. Why? Red color flower is put nearby the crystal. Therefore, he sees in that angle that core is red. The crystal is coral. Spadikaha raktaha drishyate. Now, what is mistaken? That red color is with the flower, but he mistakes it as connected to Spadika because of Samipya, nearby. Same way, our body gets pain or any pain and pleasure. Our mind is getting pleasure and pain. We are intermingling
the mind and the self. This is the highest philosophy, secret of philosophy. Both are combined by mistake. By mistake means by delusion. Mind is getting disturbed and we are disturbed. We are not at all disturbed. This is the jnana. We are only witnessing all disturbances or pleasures or pressures. All pressures are taking us to pressure. Sarve vishaya sukha disheshaha asmabhyam dukkhaya kalpante. This very, very important and very, very secret thing is explained in the Sarvopanishadsara Gita as in the stanza Vishayendriya samyogad yattadagre amrtopamam pariname vishamiva tatsukham rajasam smritam. We are taking breakfast and there was bhaji and soji. The who is eater is suffering from the, what is that called, pressure and cholesterol, etc., etc. But bhaji and soji are very tasty. He took 1, 2, 3, 1 dozen. Because our tongue is not keeping quiet. When it gets some tasteful food, what happened? Vishayendriya sanyoga. The tongue and the bhaji are connected with. Then very tasty things are eaten without limit also. What does happen? His cholesterol increased and dysentery happening. All other pains are coming one by one. जो जो सुख हमारे इंद्रियों से पैदा हो रहे हैं उसमें हम लगे रहेंगे तो हमारे व्याधि 1 by 1 आती रखती हैं. यही है हमारा ऐसा एक नियम है. जिसलिए therefore one should not mistaken Atma as Anatma. This is the problem. Therefore, Amrtatva is the self-own nature. Because जो पैदा होता है वो अंत, उसका अंत तो बहुत नियम है. Which is created will perish one day. There is no doubt about it. यत् कृतकम तदा नित्यम. आत्मस्वरूप का जो अमृतत्व है वो ज्ञान से ही हम जान सकते हैं. ज्ञान से जान सकते हैं. आत्मतत्व ज्ञानेनैव अवबोद्धुं शक्यते. विद्यया एव अमृतत्वं वित्तेन न. येन अहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम. दिस इज रेफर्ड बाय अवर, जैसे आई टोल्ड प्रीवियस ऑल्सो, और वंशी कृष्ण जी ने इसका मेंशन किया. मैं मैत्री ब्राह्मण के बारे में बोलूं ऐसा संकेत भी हुआ. जो चीज जो वेल्थ है, जो अदर थिंग्स हैं, एक्सेप्ट आत्मज्ञान विल लीड ओनली टू मॉर्टालिटी. दैट मॉर्टालिटी एंड बिटवीन लाइफ, बिटवीन बर्थ एंड डेथ may differ according to his wealth. One may get pure kanji only for his food. One may get badam halwa. That is different. Therefore, mortality cannot be removed by any wealth or any actions, because mortality is not there in Atma. Ajnanadeva mrtatvam agatam kalpitam asmakam aham riye aham jaye kada gacchati aham amrtaha asmi तत्त्वमसि ऐतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो. ऐसा ज्ञान होना चाहिए. इसलिए क्या करें? फॉर गेटिंग दैट इमॉर्टैलिटी only I am going to take sannyasa, and also I will be in the nishtha of atmajnana, nishtha jnanasya yapara. Hearing these words, immediately that Maitreyi told him that I also want only that Tattva Jnana. No lady will say this.
I don't want this wealth, these jewels, these diamonds. Who will say this? This is the Vairagya due to her Purva Punyas. He got the Parama Vairagya of the wealth. Yadahareva virajet tadahareva parvarjet. Vairagyameva jnanasya mukhyam sadhanam pratibandhagan sarvanapi nivartate. Ateva sadhana chatushteye vairagyamekhameva alam. Iska example is there in the Kathopanishad also. One boy, a small boy, 10 to 12 years boy, having Adhyayana. He went to Yamaloka according to his father's order, and Yama he asked him, what happens to the soul after death? The best teacher has been asked by the best student. Yama only knows. He takes Atma. He takes Atma or he takes Prana, that is different. Sayeva Marakaha Marananantaram Tasyaiva Prashna Kartavyaha Sarvasu Upanishatsu Iyameka Upanishad Ativa Mukhyatama Asmin Vishaye Yate Atmanaha Nasho Nasti Atmanam Naham Grinhami Iti Murtyuhu Swayamvaditi Najayate Mriyateva Vipaschit Nayam Kutaschin Nababhuva Kaschit Ajo Nitya Shashwatoyam Purano Hanyate Hanyama. उस आत्मा के बारे में आप उपदेश कर लें. उसने सोचा ये तो छोटा बालक है, आत्मा का ज्ञान का उपदेश करे तो वो सो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा मान करके उसकी योग्यता है कि नहीं. Is there any quality, any qualifications to get this knowledge? To test that quality, he gave so many boons. Rathan Vrinishva, Devaloka, Kanyaha Vrinishva, Satayushva Putra Putran Vrinishva, Bahun, Pashun, Hasti, Hiranyamashwan. The Mysore, no, the whole Bharat will be yours. I will give you. Not only Bharat, Swarga. Ye ye kama durlabha matyaloke sarvan kaman chandata prarthayasva. Ekayeva adhikari sarvasu upanishatsu etadishaha vartate yasya vairagyamekam sampurnamasid paravairagyamiti yoga sutre uchyate paravaitrishnam para vitrishnatayam paratvam nama brahmaloka trinikaraha vairagyasya avadhirmataha yadahareva virajet tharisam paramavairagyam jatam chet sampurnam jatam. Usne kaha he told immediately after that, Tavaivavahastamanrittagite, these aeroplanes, have you? Only, I don't want these vimanas or these any external beauties, external wealth. I want only my own wealth, Atma. Who is Atma? Nanyam tasman nachiketa vrinite. The same example is this lady also. Strinam Atmajnane Adhikaro Nastiti Kathanam Sarvatha Yuktam. Atmajnana Upayeshu Vedanta Upanishad Pathanam Nasti Upanishadaha Adhyenam Nasti Teva. Ateva Bhashye Sarvatra Uktam Jnane Aste Sarvesham Praninam Adhikaraha. Parantu Jnanam Katham Bhavati Ityuktu Upadesha Jayate Evam Evam Bhavati. Tatra upaye eva nemaha kriyate upayaha purvam anushthitaschet idi vairagyam sampanna atayeva arunaketuka chaina prashne striyas sati tavu me pugunsa ahuhu pashya dakshanvanna vichedadantha tasya vyakhyarupanidamasti. Maitreyi asked only the Atmajnana. He gave preaching by practice. Atma vare drashtavya shrotavyo mantavyo nididhyasitavya आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते इदम सर्वम विदितम। आत्मा का जो ज्ञान है, अगर सचमुच ठीक ठीक आत्मा के बारे में जो जानता है, उसको जानने की चीज़ दूसरा नहीं है, उसको प्राप्त करने की चीज़ भी दूसरी नहीं है।
उसको कर्तव्य कार्य भी दूसरा नहीं है। कृतकृत्यो भवति, प्राप्त प्राप्तव्यो भवति, आप्त कामो भवति। वो आत्मा कौन है, यही विचार है। आत्मा इस शब्द में ही द वर्ड इटसेल्फ रिवील्स द ट्रूथ, द 100% तत्व रिवील्स हाउ यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानि है यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। द्वितीय वस्तुरहितं पूर्णं सच्चिदानंदम आत्मशब्देन उच्यते। आपलव्याप्तो इति धातुः, अथ सातत्यगमने इति धातुः। एवं रीत्या आपनोति आदत्ते अति अधभक्षणे अवस्थात्रयमपि अतीत्य यद्वर्तते तुरीयत्वेन परिगणनायां माया संख्या तुरीयं स एव आत्मा। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थः। आत्मशब्दः अद्वितीयं वस्तु बोधयति, ब्रह्मशब्दोऽपि अद्वितीयं वस्तु बोधयति। शब्दद्वयप्रयोगस्य वस्तुतः आवश्यकता नास्ति। Two words are not necessary to the greatest adhikari. One word itself is enough. Akhandarthavade eka pradipadikaartha matra paratvam akhandarthatvam. If one gets so many doubts, to clear those doubts, so many words are coming. यह बहुत बड़ा रहस्य वार्तिकार से कहा गया है। वार्तिकार declares this in this way. Why necessity for two words Atma Brahma? One word is enough. Yato vacho nivartante. Maunam is also enough if he is uttamottama adhikari. Mauna vyakya pragadita parabrahma tattvam yuvanam. Avachane neva brahma provacha. This is the highest truth. Highest truth is very, very, very difficult to understand and very, very, very difficult to explain also. बट आत्मा ब्रह्म, आत्म शब्दस्यापि अद्वितीयं वस्तु अर्थः, ब्रह्म शब्दस्यापि अद्वितीयं वस्तु अर्थः। किताब किताब ऐसा नहीं कहेंगे, किताब सुंदर है कहेंगे। घटो घटः शाब्दबोधो नास्ति। महान् विचारः तत्र वर्तते। तत्र व्याकरण उदाहरणेन उक्त्वा मया विरम्यते। किञ्चित् कालं भवति वा? समापनी 5 निमेषेषु समापय। व्याकरणे वेदान्ते च साम्यमिति इदानीं स्फुरति। कुतः महावैयाकरणः साक्षात् तत्र गुर्वनुग्रहेण अत्यन्तं कीर्तिमन्तः अक्षरसंस्थानेन संस्कृतभाषायाः सारल्यं समास चक्र एतादृशपुस्तकानि एतेषाम् अत्यन्तं छात्राणाम् उपकाराय मया तत्र छात्राः सर्वेपि सम्बोध्यन्ते। महाबलेश्वरभट्टस्य समासः कारकः पठ्यताम्। अनन्तरं कौमुद्याः इदानीं आवश्यकता नास्ति। एवं भवतु नाम स्तोत्रे मम न आशयः। किमुक्तं पदद्वयम् एकार्थकं सह न प्रयोक्तव्यं कोशव्यतिरिक्तस्थले। कोशे तु द्वयोः अर्थः एक इति बोधनाय कोशे भवति। घटो घट इति शब्द पदद्वयेन शाब्दबोधो नास्ति। आत्मा ब्रह्म इत्यत्र अयमेव दोषः वर्तते पौनरुक्त्यं। कथमुच्यते? वार्तिककाराः कथयन्ति अस्य समाधानम्। आत्मापि सदिदं ब्रह्म मोहात् पारोक्षदूषितं ब्रह्मापि सन् तथैवात्मा सद्वितीयतयेक्ष्यते भ्रमद्वय निवृत्त्यर्थं पदद्वयमुदाहृतम्। आत्मापि सदिदं ब्रह्म, ब्रह्मे यद्यपि आत्मैव भवति ऐतदात्म्यमिदं सर्वं मोहात् अज्ञानात् अध्यासात् पारोक्षदूषितं। ब्रह्म इत्युक्तौ वैकुण्ठे वर्तते इति वैष्णवाः, कैलासे वर्तते इति शैवाः, तत्र राजराजेश्वरी नगरे वर्तते इति शाक्ताः, सूर्यमण्डले इति सौराः, गणपति मध्ये हृदयदेशे वर्तते इति गाणपत्यं। न आत्मा कुत्र न वर्तते इति पृष्टव्यं। ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म आपलव्याप्तौ व्यापकं द्वयं नास्ति तार्किकान् विहाय। परित्यक्त आगमबलैः तार्किकैः आकुलीकृतोऽयं शास्त्रार्थः इति अस्मिन् दिने मया आत्मेत्येव उपासीत इत्यत्र वाक्यार्थे तत् प्रतिपाद्यते।
इदानीं तर्के मम द्वेषो नास्ति, तार्किकाः यदि वर्तन्ते चेत् क्षमां कुर्वन्तु। अपुच्छशृङ्गैः तार्किकबलीवर्दैः अयं शास्त्रार्थः आकुलीकृतः वर्तते इति ते वदन्ति। नैयायिक अग्रेसराः भाष्यकाराः, तत्र सन्देहो नास्ति। क्वयं तर्कः भवताम्? अतीव वर्तते मौढ्यं न अतीव वर्तते नैपुण्यं भवतां यत् यस संस्कृत में द टू वर्ड्स, इफ वन word has one meaning, thus to explain the same meaning another word is not using. Book and kitab, book and kitab, what is that? To explain one thing, the synonyms, two synonyms are not, should not be used. Boy, boy, girl, girl. One cannot say this because foolish. Boy, boy, girl, girl meaning what? So means what? Therefore, one should say one word to reveal one meaning. Here, Atma is all pervasive. Brahma is also all pervasive, having no second thing. Atma, Brahma, there is no second thing, there is no second thing. This is absurd usage. This usage is absurd. Ayam prayogaha sadhu. But Bhartikara of Sureshwaracharya explains these two words are very necessary, because even though the Brahman, the supreme, all-pervasive thing, is in all the forms, but our delusion or illusion is there. Brahma is living, residing in Vaikuntha or Kailasa or Rajeshwari Loka. Paroksha. Paroksha means which cannot be seen now. It is very far away from us. Brahma. Brahma, Deva. To remove this parokshatva, this farawayness, Atma. When you say only Atma, when we say self or Atma, Sadvitiyate Yakshyate, Devadatta is different, Yajnadatta is different, Mahabaleshwara Atma is different, Krishnamurti Shastri Atma is different. There are so many Atmas, innumerable Atmanaha are there. Sadvitiyataya Ikshyate. Atma कहने से कई आत्मा हो सकते हैं, एक आत्मा नहीं बनेगा. Only one self is not explained or established now. When the duality is there, the fear will not go away. Dvitiyadvai bhayam bhavati. Aikatmyavada is the Upanishad Sara. When we say Atma, 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 there may be so many Atmas, innumerable Atmas, nth number. To remove this delusion, Brahma is there. Brahma is not there. Vakate, Brahma Vakate, Brahma Vakate. एक संगीत सॉन्ग भी है, ब्रह्म वकटे ब्रह्म वकटे. ब्रह्म एक ही है, लेकिन ब्रह्म शब्द से बोलेंगे तो वो दूसरे जगह में है, वैकुंठ में है, कैलाश में है. गुरु जी की कृपा से ही आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है. तो या ऐसे कहने के लिए सद्वितीयता भ्रम हो रहा है. When we say Atma word only, there may be a mistaken thing that so many selves are there. To remove this false knowledge, Brahman is used. When Brahman is only used, then it is far away. It is there, residing in any place. That is not good. It is with you. It is within you. It is you. It is with you. It is within you. It is you. Tvayi vartate antaryamittvene tvam prayarayannasti tvameva asti. Saha tvameva asti. Tattvamsina. To remove these two brahmas, Atma api saridam brahma mohat parokshya dushitam brahma api san tathaiva atma sadvitiya tayakshyate brahmadvaya nivartyartham padadvaya mudaha.
Only by this reason, the Yajnavalkya says Upadesha to her wife Maitreyi, Atmavare Drashtavya, Brahmavare Drashtavyam. या नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम हैं. Only one thing is differently said, Atma and Brahman. There is no two meanings. Atmaniva are khalu drishte shrute mate idam sarvam viditam. आत्म शब्द से व्युत्पत्ति ही करता. ऐसा कह करके उस आत्मा से सभी फ्रॉम ओनली दैट आत्मन ऑल द यूनिवर्स केम आउट बाय सृष्टि, फ्रॉम द सृष्टि, एंड आल्सो दे स्टे ओनली इन आत्मन स्थिति काल. और जब प्रलय होगा आत्मा में एट द एंड ऑफ दिस क्रिएशन ऑल आर कमिंग इनटू दैट आत्मन ओनली. समुद्र एकायनम वीणावाद उदाहरणम एतस्य वारे भूतस्य निश्वसितमेतद् यजुर्वेदो यजुर्वेदः सभी द होल वेदास एंड होल यूनिवर्स शब्द एंड अर्थ नाम एंड रूप आर केम आउट फ्रॉम द आत्मन ओनली, फ्रॉम द ब्रह्मन, फ्रॉम द आत्मन, बोथ आर करेक्ट. अतएव ब्रह्मसूत्र भाष्यारंभे ब्रह्म विद्या ब्रह्म जिज्ञासा इति वर्तते. भाष्यकारी अध्यास भाष्ये एकं वाक्यं वर्तते, तत् पंडिते सर्वेपि सावधानी बहुवारं द्रष्टव्यम्. अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते. ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये इति वक्तुं शक्यते, पुनरुक्तिरिव भवति. आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते. आत्मावारे द्रष्टव्यः तर्तशोकम आत्मविद, तर्तशोकम ब्रह्मविद. ऐसे जो इस तरह 10 उपनिषद्स आर डीलिंग विद द true nature of the self or consciousness. In those Upanishads, Brihadaranyaka is the highest and very large also. There are so many things are also dealt with. So many scientists are making questions to Yajnavalkya, the greatest scientist. Rishi means scientist, because I am explaining this Rishi word as scientist, because you may get the gauravam to that. Scientist is very low when comparing the Rishi. Risha gatau iti dhatoho utpannaha Rishi shabdaha sarvam variti आत्म तत्व ज्ञान वाले. इसलिए यह क्या है, ये उपनिषद का सारे है आत्मा ब्रह्म. By reading Upanishads, one cannot get this pure knowledge as strong. Only one can get with Guru Kripa. Jo Guru who are coming from the parampara, their anugraha or their grace by the words Shastra Acharya Upadesha Manu Janati. Ateva Parikshalogan Karmachitan Brahmano Nirvedamayan Nastyakrita Kirten Tad Vijnanartham Sa Gurumeva Bhigachet Samitpani Shotyam Brahmanishta. ऐसे जो तत्व ज्ञान है वो ऐसे गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं, जैसे हमारे स्वामी जी सिटिंग बिफोर दम and getting their grace and hearing their anugraha words, one can get this Atma Jnana. No other way to get this. With these words, Guru Kripa हमें हो जाए, ऐसा कह करके मेरा ऐसा सौभाग्य दान जो किए हैं स्वामी जी, दोनों स्वामी जियों के पादारविंद में मेरा प्रणाम कहकर धन्यवाद के साथ पंडितों का नमस्कार करके मैं मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूँ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम श्री गुरुदत्ता. जय गुरुदत्ता. Jai Guru Datta. It was an excellent presentation. We have too many snippets which themselves are pearls of wisdom. We are very much thankful to Shri Krishnamurti Ghanapati ji for the great lecture on Brihadaranyaka. The speciality
probably the difficulty in handling multiple languages is a bit deftly handled, because for a listener there could be disruption in continuity. Similarly, the speaker would also get affected, but that was not the case in the case of Shri Krishnamurti Harapati ji, because he is well versed in all the languages and he made it a point to repeat what all he said in English, also in Hindi, and he started with Samskrita. And Swamiji always says that if you don't know the language, don't get away, don't go away. Just keep on listening. There are many words which you can very easily pick up. This is the way the mind is totally immersed in the subject. So we are thankful to him for the great speech. జయ గురుదత్త. ఉదయం నుంచి మనకి స్వామీజీ రకరకాలుగా జ్ఞానబోధ చేస్తూనే ఉన్నారు. 600కి స్వామీజీ వారి యొక్క ప్రవచనాన్ని మనం ఇక్కడే ప్రార్థనా మందిరంలో టీవీలో చూసాం. జ్ఞానాభయోగ సమ్మేళనంలో 2వ రోజున జ్ఞానం గురించినటువంటి మాటలని స్వామీజీ తాము మనకి ప్రవచనం చెప్పిన వాటన్నిటినీ కూడా స్వామీజీ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారి ద్వారా చెప్పించారు. ఆయన యొక్క వాక్యాలలో బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులోని మైత్రేయి బ్రాహ్మణం అనేటటువంటి ఒక ఘట్టాన్ని గురించి చెప్పారు. మైత్రేయి గార్గి అని 2 స్త్రీలు యాజ్ఞవల్క్య మహర్షికి భార్యలు. వీరిరువురికి కూడా యాజ్ఞవల్క్యుడు చాలా ప్రియంగా ఉండేవాడు. ఆయన అనేక సభలలో గొప్ప గౌరవాన్ని పొందాడు. ఒకనాడు సంపదలను అన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టేసేసి ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పాడు. పెద్ద భార్య మైత్రేయి అడిగింది, అదేమిటి ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నావంటే నువ్వు తక్కువడివి కాదు, ఇంతకంటే చాలా గొప్పది ఏదో ఉండకపోతే నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళవు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చెప్పు అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తూ నేను ఆత్మజ్ఞానాని కోసం వెళ్తున్నాను అని చెప్పారు. ఇప్పుడు వారు ఒక పదం చెప్పారు, బ్రహ్మ ఆత్మ అనే 2 పదాలు ఉంటాయి కదా, 2 పదాల అవసరం ఏమిటి? ఏదా ఆత్మ అని చెప్పండి లేదా బ్రహ్మ అని చెప్పండి, 2 పదాల యొక్క అవసరం ఏమిటి? కొన్ని ఉపనిషత్తులో బ్రహ్మ అంటున్నారు, కొన్ని ఉపనిషత్తులో ఆత్మ ఉంటున్నారంటే వార్తికకారుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఆత్మ అంటే ఈ జీవిలో ఒక ఉంది, ఆ జీవిలో ఒక ఆత్మ, అనేక ఆత్మలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి అభిప్రాయం కలుగుతుంది. అందువల్ల బ్రహ్మ అనే పదం చెప్పినట్టయితే బ్రహ్మ అనేది ఏకవచనం కాబట్టి ఒకటే బ్రహ్మ ఉంది, అది ఒకటే, అదే అన్ని చోట్ల ఉంది అనే భావం కలుగుతుంది. కాబట్టి బ్రహ్మపదం కావాలి అని చెప్పారు అని. పోనీ బ్రహ్మపదమే సరిపోతుంది అంటే ఇక ఆత్మపదం ఎందుకు అని మళ్ళీ 2వ సంశయం వస్తుంది. బ్రహ్మ 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 అంటే ఏదో వైకుంఠంలోనో లేదా కైలాసంలోనో లేదా మరొక శక్తిలోకంలోనో మరొక సూర్యమండలంలోనో బ్రహ్మ ఎక్కడో ఉంది, బ్రహ్మ మన మధ్యలో ఉండేది కాదు అనే భ్రాంతి మనకు కలుగుతుంది. బ్రహ్మ అంటే చాలా పెద్దది అని అర్థం అన్నమాట. అటువంటిది ఎక్కడో ఉంది అంటే మనందరికీ కూడా ఒక రకమైన భ్రాంతి కలుగుతుంది. అందువల్ల ఆత్మ అంటే నీలోనే ఉంది కాబట్టి నీలోనూ ఉండేది ఆ పైన ఎక్కడో ఉండేది అని అనుకుంటున్నావు కదా, అన్నీ కూడా సర్వవ్యాప్తంగా ఉండేది ఒకటే అని చెప్పడం అన్నమాట. అందువల్ల ఆత్మైవ ఇత్యుపాసీత అని బృహదారణ్యకంలోని వాక్యార్థం ఆయన చెప్పబోతున్నారు ఈరోజు. అంటే ఆ బ్రహ్మ మరేదో కాదు, అదే ఆత్మ, అదే నీలోనూ ఉంది, అందరిలోనూ ఉంది అనే విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అని వారు ఛాందోగ్యంలోనూ కఠోపనిషత్తులోనూ ఉండేటటువంటి అనేక విషయాలను చెప్తూ, స్త్రీలకి ఉపనిషత్ జ్ఞానంలో అధికారం లేదని, వేదాంతంలో అధికారం లేదని కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు. అది సత్యదూరమైనటువంటిది. జ్ఞానములో అందరికీ కూడా, ప్రతి వారికి కూడా జ్ఞానానికి అధికారం ఉన్నది. అంటే అధికారం ఉంది కదా అని దాన్ని సంపాదించే క్రమాన్ని కూడా మనకి శాస్త్రం ఉపదేశించింది. ఉపనిషత్తు యొక్క పారాయణం చేయక్కర్లేదు, ఉపనిషత్తులో చెప్పిన విజ్ఞానం అంతా కూడా మనకి గురుబోధల ద్వారా మనకి అందుతూనే ఉన్నది. అటువంటి ఆ గురువాక్యాలని మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా ఆలకించినట్లయితే, విన్నట్టయితే, వినడం ఒక ఎత్తు, మననం చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు, అది అనుభవానికి రావడం ఒక ఎత్తు. ఎన్ని శాస్త్రాలు చదివినా, ఎన్ని గ్రంథాలు చదివినా మనకి ఆ వాక్యాలు పదాలు అర్థమవుతాయి కానీ ఆ పదాలలో వాక్యాలలో చెప్పిన విషయం మన మనస్సుకి పట్టదు. అలా హత్తుకోవాలి అంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఒకటే మార్గం. అటువంటి అనుగ్రహాన్ని కలిగించగలిగిన సద్గురుదేవులు మన మధ్య ఉన్నారు. వారి వల్లే మనం ఈ బృహదారణ్యకం లాంటి మహావిషయాలన్నిటి కూడా వింటున్నాం. కాబట్టి గురువు అనుగ్రహం వల్ల అందరికీ కూడా ఆత్మజ్ఞానం సంప్రాప్తం కావాలి అని వారి యొక్క ప్రవచనం యొక్క సారాంశాన్ని సంగ్రహంగా ముగిస్తూ